Assalamu alaikum everyone. Simi is here with series of 1000 plus MCQs for nursing students, post RN and MSN. This is the second video of the series and first video already uploaded है. तो जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस सीरीज़ की हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके. Question 1. A nurse is caring for a client with diarrhea. In which clinical indicator does the nurse anticipate a decrease? A. Pulse rate. B. Tissue turgor. C. Specific gravity. D. Body temperature. The answer is B. Tissue turgor. Tissue turgor means skin elasticity, which will decrease in diarrhea because decrease in interstitial fluid. Second question. For what clinical indicator should a nurse assess a client who is having a gastric lavage? A. Decrease serum pH. B. Increase serum oxygen level. C. Increase serum bicarbonate level. D. Decrease serum osmotic pressure. Answer is C. Increase serum bicarbonate level. गैस्ट्रिक लवाज में HCl लॉस हो जाता है, तो जब HCl ही अवेलेबल नहीं होगा तो वो सोडियम बाइकार्बोनेट न्यूट्रलाइज नहीं कर सकेगा, इसलिए इसका आंसर होगा इंक्रीज सीरम बाइकार्बोनेट. Question 3. A client is in a state of uncompensated acidosis. What approximate arterial blood pH does the nurse expect the client to have? A. 7.20, B. 7.35, C. 7.45 and D. 7.48. Answer is 7.20. क्योंकि यहाँ पे एसिडोसिस का जिक्र हो रहा है तो लिहाजा pH जो होगी वो नॉर्मल रेंज से कम हो जाएगी. Question 4. A nurse is concerned that a client is at risk for developing hyperkalemia. Which disease does the client have that has caused this concern? A. Crohn, B. Cushing, C. End-stage renal, D. Gastroesophageal reflux. The answer is end-stage renal. किडनी का एक फंक्शन पोटाशियम एलिमिनेट करना है बॉडी से. हाइपर क्लीमिया मीन पोटाशियम का बढ़ जाना, तो जो पेशेंट रेनल की एंड स्टेज पे होगा, एंड स्टेज रेनल डिजीज में होगा, तो वो हाइपरक्लीमिया के रिस्क पर हो. क्वेश्चन 5. अ क्लाइंट सीरम पोटेशियम लेवल हैज़ इंक्रीज टू 5.8 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर. What action should the nurse implement first? A. Call the laboratory to repeat the test. B. Take vital sign. C. Inform the cardiac arrest team. D. Take an electrocardiogram. Answer is B. Take vital sign and notify the healthcare provider. क्योंकि हाइपरक्लीमिया की वजह से डिसरिथमिया काज होता है, कार्डियक डिसरिथमिया, इसलिए नर्स जो है वो वाइटल साइन मॉनिटर कर. Question 6. A nurse adds 20 milliequivalent of potassium chloride to the IV solution of a client with DKA. What is the primary purpose of administering this drug? A. Treat hyperapnea. B. Prevent flaccid paralysis. C. Replace excessive losses. D. Treat cardiac dysrhythmia. The answer is C. Replace excessive loss. जब DKA का ट्रीटमेंट इंसुलिन से स्टार्ट किया जाता है तो हाइपोकैलेमिया स्टार्ट हो जाता है, लिहाजा फ्लूइड रिप्लेसमेंट नेसेसरी हो जाता है. Question 7. A nurse assesses a client serum electrolyte level in the laboratory report. What electrolyte in intracellular fluid should the nurse consider most important? A. Sodium. B. Calcium. C. Chloride. D. Potassium. Answer is D. Potassium. क्योंकि पोटेशियम की कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर ज़्यादा होती है, जो कि इंपॉर्टेंट होती है मेम्ब्रेन पोटेंशियल को इस्टेब्लिश करने के लिए, इसलिए नर्स पोटेशियम को कंसीडर करेगी. Question 8. A nurse is reviewing the laboratory report of a client with tentative diagnosis of kidney failure. What mechanism does the nurse expect to be maintained when ammonia is excreted by a healthy kidney? A. Osmotic pressure of blood. B. Acid-base balance. C. Low bacterial level in the urine. D. Normal red blood cell production. The answer is acid-base balance of the body. क्योंकि किडनी फेलियर में जो मेन मैकेनिज्म डिस्टर्ब होता है वो एसिड-बेस बैलेंस होता है. Question 9. A client reports vomiting and diarrhea for 3 days. What clinical finding will most accurately indicate that the client has fluid deficit? A. Presence of dry skin. B. Loss of body weight. C. Decrease in blood pressure. D. Altered general appearance. The answer is loss of body weight. वॉमिटिंग और डायरिया क्या काज करते हैं? डिहाइड्रेशन, और डिहाइड्रेशन की वजह से हमारा बॉडी वेट लॉस हो जाता है. राइट आंसर इज बी. लॉस ऑफ बॉडी वेट.
Next question. A nurse is caring for a client with diarrhea. In which clinical indicator does the nurse anticipate a decrease? A. Pulse rate. B. Tissue turgor. C. Specific gravity. D. Body temperature. The answer is B. Tissue turgor. Tissue turgor means skin elasticity, which will decrease in diarrhea because of decrease in interstitial fluid. Thank you for watching this video, and please like and comment this video, and please subscribe this